this is going to be the second part of the video where I'll be sharing my interview experience when I have cracked the interview. So if you haven't watched the first part of the interview, if you haven't watched the first part of this video, then please go and watch the first part first, then you will get to understand what I'm talking about in this video. Hello you all, welcome back to my channel. My name is Ritika. So if I have to talk about my interview day, it was 18th of November. Yeah, that was the day when I made it. Very happy about the day. So what happened with me is ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस अच्छे से बताऊंगी. लाइक मेरा इंटरव्यू था 8 से 11 बजे, सुबह 8 बजे से था. एंड आई वॉज ऑन द वेन्यू अराउंड 8. आई थिंक आई हैव रीच्ड ऑन टाइम दैट डे. मैं जल्दी उठी थी. I woke up around, I think, 6:30 or 7, and I managed to get ready. I dressed up, I did my makeup, I did my hairs, everything I did in the morning. But I was already prepared with like documents, file and your resume. ये सब कुछ आपको एक दिन पहले ही prepare करके रखना होगा. Obviously you need to have copy of your CV. वो सब की print out, चीज़ें जो भी आपको लगती है, like कुछ खाने की चीज़ें, because it is going to be a long process guys. अगर वहाँ पे 8 से 11 लिखा है तो it won't finish till 11. It will be till like 3 or 4 in the afternoon or even after that. So it depends on how many candidates are there on the venue. So the more number of candidates, the more time it will take to like complete the entire recruitment process. So it will take a lot of time. It might take the entire day. So when you go from that morning, you can do your lunch. So just keep something with you. I took like मैंने कुछ biscuits के ये रख लिए थे. मेरी मम्मी चकली बहुत अच्छा बनाती है and I love to eat chakli, so I had that also in my bag. And I think yeah, a few chocolates and something to eat, because not only me, मैंने अपने roommates को भी लेके गई थी अपने साथ में इंटरव्यू. So I had to look after them also. It was not just about me. मैं तो भूखे रह भी लेती because I was the one who was giving interview. तो मेरा वैसे भी खाने में बिल्कुल मन नहीं था. I was focused on क्या होगा, what क्या result आएगा, यही सब चलता है. It is too हड़बड़ी वाला process, okay. But मेरी friends भी थी तो obviously मैंने उनके लिए भी कुछ डाला हुआ था बैग में, so that they could eat something, though they were hungry with me for very long. And yeah, if you guys are seeing this video, thank you. I'm grateful for you. Thank you. My first round was introduction round. Obviously in that they check your communication skills. तो उसमें आपको basic से questions पूछेंगे. मैंने जैसे enter किया अंदर, there was one sir who has rejected me the last time. वो सर को देख के मैं एकदम मतलब शॉक हो गई. That oh God, मतलब इनको ही आना था. Why not any other sir? Why this only? That was very bad moment for me. Like I was questioning. I was like, ले हो गया, आज तो तू करने से रही, हो गया. मतलब अगर ये सर है तो नहीं हो सकता है. आज भी क्या है तो जाना है बस ऐसे ही. चलो भी हो गया इंटरव्यू. I lost it just by seeing that sir. I was like, okay Ritika, you're done for the day, you may leave. मैंने खुद को मन में बोल चुकी थी, okay. But then self talk, you know, self talk does the magic. समझाया खुद को. बिल्कुल सर के सामने ही बैठ गई. मैंने तो था अभी जाना ही है, अभी तो मतलब कुछ होना ही नहीं है आज, बट ठीक है अपना 100% देख ही लेते हैं. कुछ हो जाए तो हो जाए. Okay, so there were 7 to 8 people in the first slot, like in my slot. With me, there were few more candidates. That were 7 to 8 candidates with me, and all were so groomed up, so beautiful, and all of them had really good communication skills. You know, there were people who didn't had, but I was not with them. I went in with were the strongest candidates, I think, on that venue that day, and I went in with them. And it is not just said by me, it is said by one of my friend also.
yeah, she also told me after I cleared the interview that I went in with the very strongest candidates. While, okay, that doesn't matter by the way. Indigo selects you not on the basis of other people's judgment, they will judge you on the basis of how you are. So yeah, सबको इतने तगड़े क्वेश्चंस पूछे थे. एक लड़की को तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया था. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ओके, कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उस राउंड में. क्योंकि भाई उस लड़की ने बस बोला था कि, है ना, उसने अपने भाई को, मतलब व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, दिस वाज द क्वेश्चन फॉर हर. उसने बस बोल दिया कि वो अपने भाई को मैथ्स पढ़ा रही थी या किसी को तो वो कुछ तो पढ़ा रही थी. क्वेश्चनिंग स्टार्टेड जस्ट देयर. तो जो भी बोलना है सही से बोलना, दिमाग जगह पे रख के बोलना, कुछ भी झूठ मत बोल देना, क्योंकि फिर तुमको आंसर करने के लिए कुछ रहेगा नहीं. तो अगर सही में पढ़ाया है तो सही में बताओ, नहीं पढ़ाया मत बताओ. तो उसको पूछा भाई और उसने बताया भी है. एंड लाइक अगर इंडिगो के साथ में रहने के लिए मैथ्स भी जानना है तो आई एम द वर्स्ट पर्सन. लाइक आई एम द वन हु इज वर्स्ट एट मैथ. आई कैन नॉट हैंडल मैथ. आई कैन नॉट डील विथ this stuff. I was laughing. I was like so mad at that time. Like, what is that even happening? Is this Indigo interview like it is an airline interview, or what is it going on? Because there was a question asked to her from trigonometry. So she gave her answer and she was very confident. Cos theta, tan, no idea what just happened. So yeah, she gave that answer very very confidently, and she cleared that round. Okay, so in first round I think we were 3 to 4 people who cleared it out of 7 to 8 peoples. So the question which he asked me, okay, I forgot to mention that there was not just one interviewer. The sir which I have talked about was there, but also with him another ma'am. I think she was also an HR from Indigo. I don't know, she was new, or I don't know her name, but she was also very good and the most kindest kind of a person. She has a great smile which made me calm in the interview time. So I was the one, मतलब मेरे सामने HR बैठे थे वो sir, and the ma'am was like, इस मैम थोड़ा यहाँ बैठी थी, and I was like facing sir. I was the one who was facing sir, okay, and here were rest of the candidates sitting. तो वो मैम एक्चुअली सर क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैम पूरा बॉडी लैंग्वेज चेक कर रही थी, द वे आई वाज गिविंग आंसर, ये सब कुछ मैम चेक कर रही थी, और वो सर कुछ नहीं कर रहे थे. सर लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे. सर वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चन. ओके, तो ये भी एक अच्छी बात थी, मेरे को सर के साथ में आई कांटेक्ट नहीं करना पड़ा. बट या मैम वाज देयर, आई हैड टू डू आई कांटेक्ट विद मैम. सो बट ठीक है, वो थोड़ी काम सी थी, तो आई वाज ओके विद हर. हर स्माइल वाज आल्सो गुड एंड ऑल. इतना डरी नहीं मैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इंटरव्यूअर के साथ में आप बात कर रहे हो एंड ही विल नॉट स्माइल. आप इतना स्माइल कर करके आंसर दिए जा रहे हो, बड़ा अच्छे से बात कर रहे हो, एंड ही हैज दिस. सही में इंटरव्यूअर पता नहीं क्यों नहीं हंसते हैं. आई थिंक इट इज देयर स्ट्रैटेजी कि आपको फेल किया जाए या आपको रोक दिया जाए. वो इतना घूर घूर के देखते हैं ना कि फिर आप खुद को ही क्वेश्चन करते हो कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया यार, क्या हो गया है, मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, इनको क्यों ये क्यों नहीं स्माइल कर रहा है, क्या हो गया है. मतलब यू जस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. सो आई थिंक ये भी उनकी इंटरव्यू की कोई स्ट्रैटेजी होती होगी, मे बी, अकॉर्डिंग टू मी. Yeah, so the first question which he asked me was a very basic question. Where are you from? What's your age? Basic question. He just asked me one word or one line questions like, okay Ritika, where are you from? Then I told him blah blah blah. Then he asked me, okay, what's your age? I said blah blah blah. I should not announce it here. So yeah. Then after, okay Ritika, I can see you I can see that in your resume that you were working as a HR executive. So why did you left your previous job? This was the question. Blah blah blah. Yeah.
And I answered him that yes, I'm looking forward for more growth in my life, and I think that Indigo is such a platform where I'll be growing all together with this airline, and I see myself as a crew and blah blah blah. My reasons of becoming a crew and leaving a job, though you cannot say bad things about your previous organization, and I didn't say it. Okay, I was very thankful towards my previous organization. Then after only I have started giving answers that why I want to become a part of Indigo and how Indigo can support me for my own personal growth, my professional growth. ऐसा कुछ आंसर आपको बना के दे देना है उनको, जिससे वो मतलब हो गए थे. ही अग्रीड टू माई पॉइंट्स एंड मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर भी किया था, तो दैट वेंट वेल. ओके, मेरे साथ में वो 3-4 लड़कियां भी हो गई थी सिलेक्ट. 7-8 में से हम लोग 3-4 हुए थे एंड सभी के सभी इतने तगड़े थे उस ग्रुप में. लाइक आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जो सेकेंड राउंड हुआ BMI जो मैं कर लेती हूँ इजीली, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड. बहुत लोग वही कट जाते हैं, यू नो. Some people don't have the, like, some people don't match the height criteria, some doesn't come under the weight criteria. किसी को हाथ में scars थे, किसी के हाथ पे कुछ जला हुआ था. few had बहुत सारे issues निकले यार. Even though they were so talented, I was like, ये तो बहुत beautiful है, इसमें तो बहुत तगड़ा आंसर दिया था. She will be the one who will make it. एंड मेरा इतना उनसे फ्रेंडशिप करने का भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट देयर टिल द एंड. तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो ये लोगों के साथ में मैं मतलब मेरा होगा तो ये लोग तो साथ में रहेंगे ही, एंड नन ऑफ देम वाज देयर. मैं बता रही हूँ आखिरी तक कोई नहीं बचा, पता है, जो जिनके साथ में मैं गई थी और जिन लोगों ने इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में थे या मेरे साथ में स्टार्टिंग में थे, कोई भी नहीं था आखिरी तक. Even the most beautiful girl on this interview venue was not able to clear it. Okay, so tip number 1, you should not compare yourself to anybody over there, क्योंकि आपका performance in that interview round or in that conference room will only matter, not your beauty, not their beauty, nothing. तो हम बाहर बैठ के इतना क्यों जजमेंटल हो जाते हैं, वाओ शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, शी विल बी द वन हु विल क्लियर दिस एंड आई एम नॉट. क्यों करते हैं पता नहीं. नो, डोंट डू दैट. I did that, and I'm telling you there is no point in comparing yourself to anybody, because everybody has their own journey, everybody has their own mindset. कभी कभी हंसी आती है, मैंने ऐसे लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर लिया है. ओके, सेकेंड राउंड में बताती हूँ क्या होता है. उसमें आपका पहले तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा. मेरे पास में अगर उसका फोटो होगा तो आई स्टिक हियर. उसमें सभी आप बीमारियां डायग्नोस, मतलब सारी बीमारियां लिखी हुई होंगी एंड यू हैव टू टिक. आपको कुछ है उसमें से प्रॉब्लम नहीं है. और उसके बाद में वो आपका आई चेक करेंगे, कुछ रीड करने लगाएंगे आपको, 1-2 पैराज रीड कराएंगे फ्रॉम पर्टिकुलर हाई डिस्टेंस. देन आफ्टर आपका कुछ कलर ब्लाइंडनेस के लिए ऐसे कुछ दे देंगे, उसमें से आपको नंबर्स बताने पड़ेंगे या जो भी लिखा है वो पढ़ के बताना पड़ेगा. हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, स्कार्स चेक करेंगे, हाथ पे पैर पे स्टॉकिंग्स निकाल के. शायद पैर भी कभी कभी चेक होते हैं, कभी नहीं होते हैं. मेरे टाइम पे कर रहे थे, किसी के अगर थोड़ा डार्क दिख रहा था तो दे वर चेकिंग. ब्लेजर पहना है तो ब्लेजर निकाल के आपको हाथ, मतलब यहाँ तक जो भी अपने शर्ट है वो दिखाना पड़ेगा इतना, क्योंकि इंडिगो का यूनिफॉर्म यहाँ तक है तो दे हैव टू चेक योर नेक एंड ऑल, पीछे आगे सब कुछ चेक करता है. उसके बाद में दे वर नॉट लाइक टेलिंग ऑल्सो कि आपने क्लियर किया है या नहीं किया है, कुछ नहीं. वो बस बोलता है कि आप अपने रूम में जाके वेट कीजिए, वी विल कॉल आउट योर नेम. तो फिर बैठ जाओ धक धक करते हुए. बट मेरे को पता था कि मैंने इसको पहले भी क्लियर किया है एंड मैंने कभी भी मैं BMI राउंड में नहीं रुकी हूँ. बट दिस इज नॉट द सेम सिनेरियो फॉर एवरीवन, क्योंकि मैंने बताया ना, जो लोगों ने फर्स्ट राउंड इतने अच्छे से क्लियर किया था, they were so pretty girl यार. she was like a Barbie. I have never seen that beautiful girl. She was like all like white and pink her lips, and she was the prettiest girl I ever saw. Okay, she has a blue glitter or something that she did on her eyes,
and she was so pretty, but just because she was 1 centimeter less, 1 centimeter less than the criteria, she was not able to crack that interview. She was crying. She was asking that ma'am कि फिर से एक बार ले लो, प्लीज कर लो, प्लीज मेरा हाइट फिर से मेजर कर लो. और इंडिगो ने उसके लिए किया भी. they were supportive, they did that for her. उन्होंने फिर से उसका हाइट चेक किया, बट अगर वो 1 सेंटीमीटर भी कम है, they will not help it, they will not consider that, because वो आपका मतलब DGCA की तरफ से उनको कुछ regulations आया, उसको ना सर ने सीधा सीधा बता दिया कि देखो मैं भी कोई हूँ जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं मुझे, एंड आई हैव टू फॉलो दोज रूल्स. वो भी सही थे सर अपने जगह पे, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट शी वॉज नॉट एबल टू मेक इट. और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ तो बात होगी ना मेरे में, बिकॉज आई हैव ऑल द क्वालिटीज, बिकॉज आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग. फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. फिर मैंने अपना 3rd राउंड दिया. ओके, फिर मतलब मेरा नाम भी कॉल आउट हुआ ऑब्वियसली कि मैंने क्लियर कर लिया है राउंड. देन आई वेंट इन फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट वाज वर्चुअल राउंड, which was with one of the senior HR from Indigo. He asked me, first question was, what is customer service for you? Okay, then I gave that answer. Second question was okay, so for the 3rd round, it was a virtual round. I went in with 3-4 people, I think. They were sitting and I was the one who entered, and ma'am told me to just sit in front of the laptop. I didn't even got to know the questions, और कुछ पता ही नहीं चला. मतलब मैं अंदर गई और उन्होंने मुझे बिठा दिया बस उस लैपटॉप के आगे, और बाकी स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे, बट उनको फिर भी मेरा क्वेश्चन पता चला, बट आई डिडंट गॉट टू नो एनी क्वेश्चन. बस मुझे जाके बिठा दिया लैपटॉप के सामने. आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट, बट ठीक है, मैंने उनको ग्रीट किया अच्छे से. आई वाज लाइक गुड इवनिंग सर, एंड जो भी कुछ हुआ मतलब अच्छा कॉन्वर्सेशन चला. इट वाज नॉट लाइक अ इंटरव्यू. आई रियली स्पोक सो वेल विद द सर. आई वाज कॉन्फिडेंट. He asked me, the first question was, Ritika, what is customer service according to you? And then after he asked me second question, any of the challenging moment from your previous job. तो मैंने वो एक challenging ये बता दिया एक इंसिडेंट जिसमें मैंने थोड़े बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए, बट देन ओके, आई वाज नॉट फंबलिंग, आई वाज नॉट अंडर कॉन्फिडेंट ऑब्वियसली, सो चल गया. ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन. हाँ, Ritika, what according to when did you last time receive the exceptional customer service? Thank God I prepared this. What would I have done if I would not have prepared this? I have prepared this earlier only. Thank God, thank God I did that. तो मैंने इसका भी आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली दे दिया. And yeah, voila, that round was also clear. I didn't had any idea, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ चल रही थी मेरे दिमाग में कि मैंने थोड़ा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, हैड के जगह हैव यूज किया है. सो चल तो रहा था बहुत कुछ दिमाग में कि पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है. आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, और मैं बहुत देर तक वेट कर रही थी. वेटिंग एरिया में बहुत देर तक बैठी थी. मेरे बाद में भी बहुत लोगों का नाम कॉल आउट हुआ, जिनका मुझसे पहले इंटरव्यू हो गया, जिनका मेरे बाद में इंटरव्यू हो रहा था. उन सबके नाम आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या चल रहा था, बट आई वॉज वेरी कंफ्यूज. बहुत कम लोग बचे थे, सबका 3rd राउंड हो जा रहा था. फिर 4th राउंड, मुझे लगा अभी 4th राउंड होगा, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, मेरा नाम ले ही नहीं रहे थे. आई वाज सो कंफ्यूज एट दैट टाइम कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर है तो बता दो, नहीं है तो चलो जाने दो, का क्लियर करो यार. आई वाज सो मच पेशेंस कम है ना मुझमें, पेशेंस की कमी है. सो या पेशेंस उस समय में अपना बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था मेरा पेशेंस. तो बहुत कम लोग बचे थे, एज आई वाज सेइंग कि बस 14 और 15 गर्ल्स बची थी आउट ऑफ दोज 500-600 पीपल. आई वॉज वेरी शॉक्ड, कितनी ब्यूटिफुल लड़कियां थी, एंड दे वर नॉट देयर टिल द एंड.
So beauty doesn't count. If any one of you is thinking कि cabin crew बनने के लिए beauty matter करती है, I'm telling you, no. It might give you a privilege, but it is not something they are looking for. They are looking for the entire personality. That is your mindset, your communication, your grooming, your personality, everything. Okay, so they want the entire package, not just the beauty. हाइट वाइट जो भी है सब कुछ ही आना चाहिए ना उस क्राइटेरिया में, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नो यू आर नॉट. So what happened is I was like very confused, like if there is a fourth round, why are they not calling out, or what is it happening? I was very confused. और वो मेरा नाम ले ही नहीं रहे थे, नाम ले रहे थे, कुछ लोगों को वो घर भेज दे रहे थे. फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं फोर्थ राउंड के लिए हूँ, क्योंकि मेरा नाम उनमें है ही नहीं जिनको वो घर भेज रहे हैं. तो ओके, दैट मीन्स आई एम देयर फॉर द फोर्थ राउंड. मैं फोर्थ राउंड एक्सपेक्ट कर रही थी. देन आफ्टर मेरा नाम भी कॉल आउट हुआ, दे कॉल्ड मी, और उन्होंने ऐसा बोला, लाइक निकल गए हम लोग, ठीक है. उन्होंने नाम कॉल किया एंड दे सेड टू कम विथ मी. एंड बहुत कंफ्यूजन चल रहा था माइंड में, क्या चल रहा है क्या चल रहा है. एंड सर एकदम से ऐसा हुआ कि सडनली सर आस्क्ड मी, डू यू हैव पेन विथ यू, जस्ट कैरी अ पेन विथ यू एंड देन कम. आई वाज लाइक, पेन क्यों चाहिए इंटरव्यू में? आई वाज लाइक, पेन तो साइन करने के लिए चाहिए होता है. Am I hired? What is it happening? Then after उन्होंने PhD का लेटर थमा दिया and he told not to read that, just sign over there. अपना मेडिकल के लिए जो भी प्लेस तुमको चाहिए वो वहाँ पे मेंशन करना. And then I understood, अगर मेडिकल का चल रहा है, that means I am hired, I am with Indigo now. So yes, I was there for PhD. I had 1 month of PhD training, which is like around 22 days. I am thankful for every experience in my life. Because of the PhD, I was able to make very beautiful friends, and I was there with very beautiful trainers who had a green mindset. I was being able to train with them in PhD. One of I am not supposed to tell their name here, right? So okay, let it be. I'll not mention their name, but they were the most kindest people I have ever met. I have learned so much in my entire training, and I made very beautiful friends. I have them in my contact today, and I'm very thankful for each one of them. And yeah, I'm looking forward for my initial training now. And yeah, this is all about my interview experience. I hope you all loved this video and you have learned something from this video. If yes, please comment me down. It means a lot to me. And do subscribe my channel. It will be an appreciation and motivation for making a lot of more videos in upcoming days. And the next video might be related to PhD, and if you want to know, please also comment that in the comment section. I will be happy to read all of your comments. Let's see you in next one. Bye bye.